Hello students, this is a very good question in which we have to calculate the equilibrium constant of the reaction. What is the reaction? Cu solid plus Cu2 plus aqueous and the product is 2Cu plus aqueous. The values given to us is E naught Cu2 plus 2Cu is 0.34 volt and E naught Cu2 plus say Cu plus is 0.15 volt, and one data is also given to us, that is log 3.72 is equal to 0.571. These are the data given to us and we have to calculate the equilibrium constant of this reaction. Okay, now see, in my lectures I have taught you how to calculate the equilibrium constant. So I will take advantage of that, right? I have taught you the equilibrium constant of the reaction is 10 to the power Ne naught upon 0.0591, right? 10 to the power E naught cell upon 0.0591, right? This is the value of the equilibrium constant. So in this question, first of all, we have to calculate the value of E naught cell and the value of N. एक बार हमने E naught cell और N की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाएगा, राइट? N की वैल्यू और E naught cell की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेल रिएक्शन लिखना चाहिए, राइट? तो नाउ राइट द सेल रिएक्शन. ओके, फाइन. इट इज एनोड. आप सभी को पता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? It will be oxidation. What will be the reaction taking place on anode? It is Cu solid and it is what? It is Cu plus aqueous and plus one electron. And what is the reaction taking place on cathode? Cathode पे कौन सा reaction हो रहा है बताओ? It is reduction. It is reduction. And what is the reduction taking place? Cu2 plus say Cu plus. This is the process of reduction. And Cu say Cu plus. This is the process of oxidation. So what you will write here? It is Cu2 plus aqueous and plus one electron. And this is what? Cu plus aqueous. Fine. अगर ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर हमें E naught किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलो E naught ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जरूरत पड़ेगी and that will be E naught Cu2 Cu plus, right? And this is E naught, the standard reduction potential value, that is E naught Cu2 plus say Cu, right? Okay, E naught Cu2 Cu plus, E naught Cu2 Cu plus, क्या ये value हमने given है कहीं पे भी? E naught Cu2 Cu plus, this value is not given. Let's suppose this is X volt. And E naught Cu2 plus Cu, E naught Cu2 plus Cu, this value is given to us. E naught Cu2 plus Cu plus Cu plus. E naught Cu2 plus Cu plus, this value is given to us. And this is how much? This is 0.15 volt. This value is 0.15 volt. Here it is loss of one electron, here it is gain of one electron. हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब कि एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है कैथोड पे भी अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, राइट ना? तो इन दैट केस हम E naught सेल की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इस वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट ना? ओके, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E naught सेल? E naught सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी 0.15 प्लस x volt हो जाएगी, right? And what will be the cell reaction? What will be the cell reaction? Cell reaction. What is cell reaction? This electron and this electron is getting cancelled out. So this is Cu solid plus Cu2 plus aqueous, and here it is 2Cu plus, right? यहाँ पे same cell reaction मिल गया. Are you getting? Cu solid से Cu2 plus and this is what? 2Cu plus aqueous. Are you getting this? Okay. अब देखो हमें इस x की वैल्यू पता नहीं है,
अगर हमें ये x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इस सेल रिएक्शन को देखूं तो एनोड पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कैथोड पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि here n is equal to 1। n की वैल्यू 1 हो गई, हमें पता चल गया। अब हमें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है और ई नॉट सेल की वैल्यू के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है। मतलब कि ई नॉट Cu से Cu प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करना जरूरी है। अब देखो ई नॉट Cu से Cu प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा है। Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू गिवन है, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू गिवन है और ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यू गिवन है। इन दोनों डेटा से हम ई नॉट Cu से Cu प्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप सभी को पता है, हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट का हेल्प लिया था। हमने बोला था कि डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ई नॉट सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए हम ई नॉट सेल की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन ना हो। यहाँ पे हमने ऐड किया, क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा था। तो हियर वी कैन डू दिस, राइट? तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई नॉट Cu से Cu प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट? ओके फाइन। तो अभी हम लोग ई नॉट Cu से Cu प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी? 0.15 प्लस x वोल्ट आई थी। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, दिस इज Cu2 प्लस, दिस इज Cu प्लस एंड दिस इज व्हाट? C। E naught value of Cu2 से Cu, E naught value of Cu2 plus से Cu is how much? 0.34 volt. And what is N here? N is equal to 2, right? E naught of Cu2 plus से Cu, that we have to, it is given here. It is how much? It is 0.15 volt and N is equal to 1 here. And Cu plus से Cu, that we have to calculate, right? So suppose, fine. So what we can write here? We can write 2 into E naught, 2 into E naught Cu2 plus say Cu is equal to E naught Cu2 plus say Cu plus and plus it is E naught Cu plus 2 Cu. तो ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है? Cu2 plus से Cu, this is 0.34 volt. So this will be 0.68 and E naught Cu2 plus Cu, this value is how much? 0.15 volt plus E naught Cu plus Cu plus say C. Fine. So what we can say is this is E naught and this is Cu plus say Cu is equal to 0.53 volt. E naught Cu plus से Cu की वैल्यू हमें कितने मिल गई? 0.53 वोल्ट मिल गई। तो अगर E naught Cu plus से Cu की वैल्यू 0.53 वोल्ट है तो Cu से Cu plus की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ 0.53 वोल्ट हो जाएगी, राइट? यस। तो इट मींस कि it is E naught thus it is E naught, it is Cu say Cu plus, this value is how much? Minus 0.53 volt. So what will be the value of E naught cell? E naught cell will be equal to 0.15 minus 0.53 volt. Means that this is going to be minus of 0.38 volt. Minus of 0.38 volt, right? अब हमें n की भी वैल्यू पता है और E naught सेल की भी वैल्यू पता है, तो we can easily calculate the value of equilibrium constant, right? N is equal to 1 and E naught value is how much? 0.38. Fine. Now see, it is, so thus K equilibrium is equal to 10 raised to the power n is 1 and E naught cell is how much? Minus 0.38 upon 0.059, right? If we'll solve it, it will be minus 6.46
429. This value is how much? This minus of 0.38 upon minus of 0.38 divided by 0.059. If you solve it, you will get minus of 6.429, right? And you can write this like that, and you can write it like that: 10 raised to the minus power 7 into 10 raised to the power 0.0571. Minus 7 plus 0.0571 will be equal to how much? Will be equal to minus 6.429, right? Okay, and if log of 3.72 is equal to 0.571, it means the 3.72 is equal to 10 raised to the power 0.571. तो 10 raised to the power 0.571 की जगह मैं सीधा क्या पुट कर सकता हूँ? 3.72 पुट कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो गई? 3.72 into 10 raised to the minus power 7. तो this was a good question. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ये डिराइव करके आपको समझाया था, that is 10 raised to the power n e naught upon 0.0591. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक n और दूसरा e naught. तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना, रिडक्शन का रिएक्शन लिखना, n की वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट? e naught की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो डेल्टा g naught का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके e naught की वैल्यू अप्लाई करना. e naught की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड नहीं करना, वो वैल्यूज डायरेक्टली केवल तभी ऐड होंगी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन सेम हो जाए, राइट? ओके, तो यहाँ से आप E नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना. एक बार आपने E नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है. फाइन, चलो बाय, टेक केयर.